जनरली आपको लगता है कि इंडिया से हम लोग क्यों बहुत ज़्यादा पीछे हैं? शादियों से बाहर निकलेंगे तो कुछ होगा या इलेक्शन के प्रॉब्लम से निकलेंगे तो कुछ होगा. There is now 90% banked population in India. Wow. We need to be braver than we are right now. I joined Maple Leaf as the marketing manager. I was the only female marketing manager in the cement industry. In this world of patriarchy, it's very, very hard. You have to work 3-4 times more than your male counterpart to prove yourself. I've been through where in a meeting room, a male voice is heard more than a female's voice. It's tough being a woman in the corporate world. You have to have a very tough skin. But उसमें आपको लगता है कि वो अगर बहुत ज़्यादा टफ स्किन है तो वो आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल को बन बहुत जाती है. डैमेज करती है. सारे लोग हरी फूडी होते हैं. होना पड़ता है ना, और कुछ है नहीं करने को खाने के अलावा. When you were growing up, तो उस टाइम what were you thinking कि क्या करना है? Even as a child, I was very fascinated by advertisement. उस टाइम का जो यूनिवर्सिटी लाइफ थी वो किस तरह का? I used to carry my CPU. Like actually? Yeah, like the बड़ा CPU. Wow. पहले हमें लगता है कि फिर भी अच्छी मार्केटिंग थी. In the race of churning out content, the quality has gone down. When we were doing this Nikah Nama campaign, we were very, we had prepared a proper crisis communication. We're scared as people. We don't know कि इसका repercussion क्या होगा. क्योंकि जब आप women empowerment की कोई campaign की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या rebellious campaign आने वाली है. So I think we're just scared as a nation. The only I think awareness in Pakistan is the committee system. Yes. बस उन्होंने TikTok के जो bios होती है ना उस पे investors लिखा हुआ. जी. And people like what do you mean by your investors? कहा हाँ वो have invested like 100 रुपए का बिटकॉइन लिया हुआ है, मैंने 1000 रुपए का लिया हुआ है. It's just like crazy. Yes. The most important thing is to start the conversation. Yeah. That's the biggest. Yeah. कि लोगों That's को what पता we've तो done. We've yeah. started the conversation. Hi everyone, welcome to another episode. आज हम थोड़े से different topic के साथ आए हैं. Today we will be talking about financial inclusion and financial literacy. Today we have Head of Marketing and Communication, easypaisa, with us. Rifah, thank you so much for taking the time out. Rifah, thank you so much for coming onto the show. आपसे off the record भी काफ़ी बातचीत हुई last time when we met. I wanted to know a little bit about your background before we go into this whole, your work and the corporate world and the experience जो सारा का सारा अभी जो है आपका. So थोड़ा सा कि मुझे बताएं कहाँ से आप हैं, what did you studied? I am from Lahore originally. Okay. पक्की लाहौरी, foodie. सारे लाहौरी foodie होते हैं? होना पड़ता है ना, और कुछ है नहीं करने को Okay. खाने के अलावा. So yeah, big foodie, love to cook. But from Lahore, मेरी सारी schooling, everything from LGS. Then I went to LSE, did my bachelor's there. MBA भी मैंने वहीं से किया. I started my career 17 years ago. And when you were growing up, तो उस time what were you thinking कि क्या करना है? Because I mean अभी भी यही करना है, क्योंकि जब मैं बड़ी हो रही थी, I remember my mom always says कि जब मुझे वो खाना सिर्फ तब खिलाती थी जब एड ब्रेक होती थी पीटीवी के ऊपर. तो जो 20 मिनट की एड्स जब चलते थे तो आई वुड ओनली लुक एट द टीवी जब एड्स चल रहे होते थे. तो मे बी शायद बचपन से मुझे आई रियली वांटेड टू बी हियर. आपके टाइम पे जो पूरा का पूरा मार्केटिंग या जनरली उस टाइम क्या, बिकॉज उस टाइम तो ज़रा पीटीवी और एटीएन या पहले तो पीटीवी था. हाँ, हूँ मैं इतनी बड़ी, सिर्फ पीटीवी था. बट देन ऑफ कोर्स व्हेन आई वाज इन माय टीन्स तो एनटीएम आ गया था. And then of course cable came in the 90s. But what was your sort of first few, आप कह लें कि वो जो thought process है towards the marketing या advertising, because उस time तो इतना तो नहीं था. Mind, मतलब as in it was not something that I was thinking about. Okay. But it always fascinated me कि अच्छा ये कैसे बनता होगा, इसके पीछे क्या होता होगा. It always fascinated me कि ये What's the process कि ये ad होता क्या है, मतलब इसके पीछे कौन लोग होते हैं. Even as a child, I was very fascinated by advertisements. But आपके घर में या family में भी कोई था? It's like a more of a creative world. Not really. Okay. No. सारे like जरा सरकारी type. हाँ नहीं, my father had his own business. Okay. Still does. He's a rice exporter. My mom teaches. So वो क्या पढ़ा रही थी? she teaches A levels, world history. Okay. So लेकिन बचपन से टीचर हैं तो वो बहुत टीचर स्ट्रिक्ट सही. किस्म की खातून है. बट उनकी तरफ से नहीं था कि कोई डॉक्टर इंजीनियर जो अभी तक मेरे ख्याल से पिछले 30 सालों में हम मैंने कभी वो अगर होती यहाँ तो कहती है कौन सा मेरी बात सुनती है. बट नो, नॉट रियली. बट ऑफ कोर्स ग्रोइंग अप, आई एम द एल्डेस्ट इन द फैमिली. ग्रोइंग अप एवरीबडी थॉट कि अच्छा बस बीए कर ले तो शादी हो जाएगी टाइप, शादी कर लो. सो
nobody stopped me from being career oriented, but there was no like saying कि अच्छा हाँ ये career choose करो या कुछ ऐसे करो, all of that. But he said अच्छा teaching कर लो if you want to do like because she's also a teacher. टीचिंग कर लो, बड़ा मजा आता है. एंड आई हैव नो पेशेंस. एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मेरी अम्मा भी पढ़ाती हैं तो वो सारी टीचर्स को लगता है कि शायद ना दिस इज द बेस्ट. अच्छा है वो आराम से 9 बजे के 2 बजे. आई मीन देयर इज छुट्टियां होती हैं और आई डोंट थिंक इट्स इजी लाइफ. बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है. पता नहीं, मुझे तो लगता है, मैं तो अम्मा कहता हूँ ये तो बस आप पार्टी कर रहे हैं, 9 बजे जाते हैं, फिर वेकेशंस भी हो रही हैं, ट्रिप्स भी हो रही हैं. ये है. तो माय मॉम वुड आल्सो से कि देखो कितनी छुट्टियां मिलती हैं एंड ऑल ऑफ दैट. आई एम लाइक मुझे कभी it attract नहीं किया, and I think I don't have patience with children. Okay. That's also one of the things why I was not interested in teaching. But this is something that marketing has always been very intriguing for me. और जब आप like generally within the university वाला जो पूरा life था, that's also उसमें भी I took most of my major courses were marketing courses. Okay. So my MBA was also in marketing. उस टाइम के स्टूडेंट्स कैसे होते थे? I mean again I'm saying उस टाइम it's not कोई 1920 की मैं बात कर, 20 साल पुरानी बात है. But like generally because आजकल तो अभी to be honest like हमें भी लगता है कि हम पुराने ज़माने के in a sense के Gen Z और ये अल्फा और सारा, but उस टाइम का जो यूनिवर्सिटी लाइफ थी वो किस तरह का था? Because again I'm asking in a sense वो डिजिटल नहीं था. हाँ, डिजिटल नहीं था. ब्लैकबेरीज होते थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे. आई रिमेंबर the first time I got a mobile phone was a feature phone, obviously, and I had just started university, and I really had to convince my parents that I need a mobile phone because they used to say कि यार ये ज़रूरत नहीं है इसकी, क्या करना है तुमने फ़ोन को. But I like यार कॉल करनी बताना पड़ जाता है कि हम इधर हैं उधर. Like they could not fathom के मोबाइल फ़ोन की क्या ज़रूरत हो सकती. Although my dad had a mobile phone in 1994. Remember those PT वाले Parktel वाले phones? Like my dad has had that for a very long time. But मैंने कहा क्या ज़रूरत है मोबाइल फ़ोन की. But that was the first time I was in the first year of my bachelor's that I got a mobile phone. अब तो कोई सोच भी नहीं सकता इतनी देर इंतज़ार करेंगे फ़ोन के लिए. और उस टाइम जो आपके क्लास फेलोज या जो आपके वो थे सारे स्टूडेंट्स आने वाले बच्चे, उनका माइंडसेट किस साइड पे ज़्यादा था कि यार क्या हमने आगे जाके करना है? Lots of people like it was a mix between finance and marketing. So और कुछ ज़्यादा नहीं होता था, या finance कर लिया business पे या marketing कर ली. So दो ही थे जिसके अंदर like there was no like कि social sciences भी होता है कुछ. But I could see that rapidly changed after me. Like मेरे जो छोटे बहन भाई हैं, they have diverse education. So I think हमारे टाइम की टाइम्स भी बड़े फ़र्क थे. Like we would carry like a CPU to the school for our presentation. So like I used to carry my CPU to, like actually yeah like the बड़ा CPU. Wow. I used to carry it to my because अगर फाइल इतनी बड़ी नहीं, फ्लॉपी पे नहीं आती थी ना. अगर फाइल if there's a lot of media that you want to present, पहले तो हमारी presentations were on these चार्ट्स जो हम वो प्रोजेक्ट करते थे, उसके ऊपर लिखते थे. उस तरह हमारी टीचर्स हमें पढ़ाती थी. बट देन व्हेन वी यूज्ड टू मेक प्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली पावर पॉइंट था, इतने पुराने नहीं हैं. बट वी यूज्ड टू कैरी आवर CPU बिकॉज फाइल इतनी बड़ी होती थी, फ्लॉपी पे नहीं आती थी. और CDs पे भी शायद नहीं होती थी, CDs ख़राब हो जाती थी. तो व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज जस्ट पिक अप आवर CPUs, go plug it in to the monitor. Yes, so we've done that. We've carried our CPUs to the university. Sort of, I think. Okay. Like people carry their laptops now, we used to carry our CPUs. So yeah, it was an interesting time. But of course things changed very very rapidly. और अभी like when you compare, I want to talk a little bit about the financial literacy or generally the digital literacy. उस टाइम का मुझे तो लगता है कि अभी भी शायद फाइनेंशियल लिटरेसी कहीं भी नहीं है. वो तो जब आप डिजिटल देख के पता चलना शुरू हुआ है कि कुछ सोचना चाहिए. हाँ, बट आप अगेन उस टाइम जो है कुछ था थोड़ा बहुत इस तरह का like little bit of the awareness. The only I think awareness in Pakistan is the committee system. Yes, I mean informally yes, that everybody like women want to be financially independent, right? That's why this committee system had come into being. कि कमेटी डाल के थोड़े से पैसे जो भी घर से बचे हैं उनको डाला, महीने का कुछ वो किया, उसके बाद कोई बड़ी चीज़ खरीद ली, राइट? सो दैट कमेटी सिस्टम हैज एग्जिस्टेड बिकॉज देर इज एंड ऑलवेज वाज अ नीड to be financially independent. That existed. Like even my nano used to put in committees, right? So it's like it's been here for such a long time.
So I think the need for being financial independent has always been there. It's just that उसको कितना हमने formally evolve किया है, that's something different. अभी भी committee is very popular. Yeah. अभी तो startup से एक दो आ गए हैं जो पूरा exactly, and we're also maybe exploring things like the recent product that we've launched, which is a savings pocket. That's also some sort of committee, right? You save towards a goal. So ये committee भी basically goal based saving ही होती है कि आपने एक goal है, आपने कहा यार मैंने घर के टीवी खरीदना है, क्या करो यार committee डाल, ठीक है. So it's you have a goal. उसके मैकेनिक्स फर्क है, किसी के लिए लोन होता है, किसी के लिए इन्वेस्टमेंट होती है. जिसको पहले मिल जाता है उसको लोन होता है, जिसकी बाद में निकलती है उसकी इन्वेस्टमेंट है. So of course works in a very flexible way, but we're a lot of, not just us, but I think the entire industry is working towards this financial inclusion and independence for women, and I think it's very important. It's the need is always going to be absolutely. Or wahan se, so when you finish your university, so what was the first sort of step or the next step towards so I joined then ICI, now Akzo Nobel. I joined that. It was a British company back then. So उसमें मैं management trainee. That was your trainee, job or like internship? Management trainee. I joined as management trainee after my MBA. And I was there for 2.5 years. Then उधर मैं कोई core marketing नहीं कर रही थी because it's more B2B. So I was the product manager for Soda Ash, जो उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. And how was that experience overall? Their factory was in Kyoda. और मैं बैठती थी लाहौर में. But I used to travel to Kyoda a lot. So it was a nice, जैसे factory living होती है, वो मज़ेदार थी. So it was working, of course it was great. It was a multinational, big multinational. And I was one of 4 people who were selected from Pakistan in that batch. So 4 लोग select हुए थे as management trainees. I was one of them. Then I went to a very strange business. It was, I joined Maple Leaf as the marketing manager. I was the only female marketing manager in the cement industry. So it was unheard of कि कोई खातून जो है वो marketing कभी देख रही होगी किसी सीमेंट की. And I would go to places like Laya and Samandari, and people would not let me out of the car and like नहीं मैडम आप गाड़ी में बैठे हैं. Like गाड़ी में मैं बैठूंगी तो फिर काम कौन करेगा उतर के. So very interesting. But when you were growing up उस time, मतलब अभी तो ज़ाहिर डिजिटल की वजह से बहुत ज़्यादा वो है ना कि कोई like there are people who you look up to कि यार अच्छा मेरी इंडस्ट्री के अंदर ये है तो I need. अभी भी आई थिंक इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड द मार्केटिंग और जनरली लाइक खवातीन बहुत कम उस तरह आपको स्पेशली जो टॉप लेवल पोजीशंस हैं, तो आपका कोई था कि यार लाइक this is someone like who I wanted to be? I always admired Musharraf Bhai a lot. Okay. And later on Indra Nooyi, who is the president for Pepsi Global. So yeah, these few women I think I really look up to. I think it's very hard coming from the subcontinent and becoming this big, especially in this world of patriarchy. It's very, very hard. And you have to work 3-4 times more than your male counterpart to prove yourself. So it is very hard. Sabse bade, like if I ask you like what are the big sort of 2-3 challenges when you go into the corporate, training कर ली, छोटी मोटी positions में आपने काम कर लिया, थोड़ा settle down, काम समझ लिया, उसके बाद like सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ में होती है to grow? मुश्किल तो पता नहीं होती है कि नहीं, but I think it's important to have a lot of patience. और मेरे में नहीं है इतनी ज़्यादा पेशेंस. वो पाकिस्तानियों में जनरली मेरे ख्याल से है. बट बहुत ज़्यादा ट्रेन करना पड़ता है टू कीप काम, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन अगर किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होती हैं तो उन्हें कहते हैं ये तो बड़ी इमोशनल है, ये तो बड़ी अग्रेसिव है. अगर वही सेम चीज़ कोई मेल काउंटर पार्ट कर रहा हो तो उसे कहते हैं यार बड़ा पैशन है इस आदमी के अंदर. सो दिस इज़ समथिंग दैट एंड पीपल डोंट डू इट नोइंगली. दिस इज़ how the world is. And of course it's tough for a woman to there are times that I've been in meetings where I said something and after 5 minutes some male person says the exact same thing to say yeah amazing idea, बहुत अच्छा होता है अभी भी like अब शायद नहीं होता इतना, लेकिन मतलब I've been through it. I've been through where in a meeting room a male voice is heard more than a female's voice.
I've been in situations where शायद अगर मैं हेड भी हूँ ना तो शायद मेरी तरफ देख के बात नहीं करेंगे. वो किसी कोई ढूंढेंगे मेल बंदा, उसके साथ बैठ के बात करेंगे. लेकिन आपको क्या लगता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो बहुत लाइक ज़रा जो बाहर से परसेप्शन है कि जी ये बड़ा ही क्लासी है, बड़ा लाइक सॉर्ट ऑफ अपर क्लासिश टाइप है, बट उधर भी अगर आप इस तरह की चीज़ें और काफ़ी शुरू से देखने में भी सोसाइटी इज वेरी पेट्रियार्कल, राइट? एंड अब बहुत कम है. लाइक जब हमने शुरू मैंने किया था तो बहुत ज़्यादा होता था. अब बहुत कम है. ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स ऑफ वुमेन आर नाउ इन द वर्क फोर्स. जब मैंने शुरू किया था तब नहीं थी. बहुत सारी जगहों के ऊपर मैंने एक ऐसी जगहों पे काम किया हुआ जहाँ पे मैं अकेली लड़की होती थी. So this is not wasn't very prevalent when I started off my career. And I've been in situations, not just like in the corporate world, आप किसी customer को मिलने जा रहे हैं, उधर भी ऐसे है कि मतलब अगर मैं head हूँ और मुझसे बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे कोई बंदा बताए यार, उससे बात करें. So it's not about being in the corporate world. आपने और भी तो लोगों को मिलना है इर्द गिर्द, right? So it exists in the society. And it's much better. People are much more aware. They know what to say, but there's still people who don't, right? Yeah. So बहुत अपने आप को prove करना पड़ता है as women to get ahead, and you definitely need to work harder. Much smarter, I think, not harder. You have to work smarter. और generally within सारे जब आप एक corporate world में आ जाते हैं और उसमें especially जब आप grow करना शुरू करते हैं, उस साइड पे क्या आपको लगता है कि what are the big sort of challenges? Because अक्सर लोग people reach out to me या generally सुनने में आता है कि यार एक कोई बच्चा है या एक बच्ची है, like they've started working, और एक वो ladder है ना, तो उस ladder का एक तो patience is the biggest. मतलब आप you cannot just skip and go. But generally आपको क्या लगता है कि what are the big challenges उस ladder को cross करने में? I think you need to be very smart about your choices, and you also have to have the right mentors. You need to know who to talk to, what to say when. I think आजकल के बच्चे शायद ज़्यादा mature हैं from what we were when we were younger. I also think कि exposure बहुत ज़्यादा है अब, so people are very well self-aware now, जो कि पहले नहीं होते थे. So I think things are getting better, but still obviously there's a long way to go. If you compare our corporate world to, for example, the European corporate world, दुनिया ही फर्क है. लेकिन वहाँ भी आपको सी लेवल पे बहुत ज़्यादा ख़वातीन तो नहीं नज़र आती हैं. यहाँ तो ज़्यादा ही हैं, लेकिन हाँ बहुत नहीं नज़र आती. That's what I'm saying. पूरी दुनिया में ये एक है. अब I don't know if you remember, but a few years ago, Iceland Reykjavik में एक हुआ था when there is a pay gap between women and men, right? There's gender pay gap that exists in Europe. And Hollywood exists everywhere. Hollywood में है, Bollywood में है, हर जगह है, right? So basically, what they calculated was that women were paid 74% of what men were paid on an average. So one day, how women told the world this was कि Reykjavik में one day women left at around 4 p.m. or like 3:15 p.m. and all the women from everywhere, they left their offices and they came out to the streets. And when people asked them, why are you here? What happened? Like, because we're paid 74% of what men are paid, so we will just work 74% of the time. Why should we work the full 5 p.m.? अब मुझे ये नहीं याद है कि अब उसका क्या हुआ था, but obviously Iceland is much better than Pakistan or anybody else. Maybe even it's better than the US. But this is what happened even in very, very developed nations. So I think it's tough being a woman in the corporate world. Very tough. You have to have a very tough skin. बट उसमें आपको लगता है कि वो अगर बहुत ज़्यादा टफ स्किन है तो वो आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत डैमेज करती है? बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स जो काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि यार ये बंदा मतलब ना वो एक द पर्सनालिटी इज लाइक गेटिंग अ बिट लाइक रिजिड. Unfortunately, yes, that's a side effect of it. That's you become that person. You become very rigid. You become very you know what you want. And you only get ahead when you know this. Unfortunately, खवातीन को थोड़ा सा ज़्यादा होना पड़ता है. मर्द सोसाइटी ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता. And can you switch off it as well? मुश्किल होता है स्विच ऑफ करना. आप दिन में 75% of your time you're spending in the office. You're in that mode, right? So घर जाके भी वही मोड ही रहता है, बॉस मोड.
और थोड़ा सा मुझे बताएं लाइक इन टर्म्स ऑफ द decision making, in terms of like getting the work done, in terms of getting the mentorship वाली side, because अरे आप पढ़ते कुछ हैं, काम कुछ आप आके करते हैं, और वो एक अलग दुनिया में यू एंटर के जहाँ ठीक है आपको थियोरेटिकली तो पता है कि क्या है, बट जिस तरह दुनिया इवॉल्व हो रही है स्पेशली इन द मार्केटिंग तो बहुत ही ज़्यादा ना, उसमें तो देयर इज़ नो लाइक बुक कि आपने बस इसको खोलें फॉलो कर लें. सो व्हाट इज़ योर प्रोसेस ऑफ लाइक थिंकिंग अबाउट वेदर it's a product, whether it's about a campaign, whether it's about like any project? My thought process is always, obviously my team works on it with me. It's not just my thought process. My agencies, my team, everybody brings in their ideas about a campaign. But I think mere liye important hai that we should be doing something that creates an impact. And I keep telling my team this as well, that we should not be settling for mediocre. That's not what we want to do. Or it can be a hit and a miss. कि ज़रूरी नहीं है कि mediocre work जो है वो ज़रूरी नहीं है कि impactful work जो है वो हमेशा अच्छा ही निकलेगा या उसका result super ही आएगा, right? But I think I want to be known as a brave marketeer. That's what I want to be known as. I want to be, I don't want somebody to say कि oh ये तो वो करती है जो हर कोई कर रहा है. I want to be somebody when we talk about the brands that I've worked on, my brands need to be brave brands. That's what we want to do. Whether it was Food Panda or now it is easypaisa or Metro or any other brand that I've worked on, I want to do impactful brave work. That's what I want to do. So you talked about like marketing world. ये कितना चेंज हुआ आपको लगता है like over the last let's say 2 decades? And again I'm asking this because I did a podcast with Ahmed Kapadia और Rehan Merchant as well, और मैंने उनसे पूछा, and to be honest like they are like sort of giants, but I was a bit amazed कि they were like यार पहले हमें लगता है कि फिर भी अच्छी मार्केटिंग थी. मैं एक्चुअली एग्री करती हूँ उनके साथ काफी like like Pepsi के ads अभी भी आपको याद हैं, आपके कोक के या मतलब I agree. I think memorable marketing ज़्यादा होती थी. उसकी ये तो नहीं वजह कि ऑप्शंस भी कम थे, अब तो like TikTok and like it's just like too yes, much. but I think in the race of churning out content the quality has gone down. In the race of कि यार अभी निकालना है फौरन करो, वो उसके अंदर ना ऑब्वियसली आप कितनी ही ज़्यादा कैंपेन निकाल सकते हैं. अगर आपने हर महीने एक कैंपेन निकालनी है तो क्रिएटिव्स भी थक जाएंगे ना, हर कोई थक जाएगा, और यू कांट ऑलवेज डू सुपर वर्क. सो आई वुड से डू लेस वर्क बट इम्पैक्टफुल वर्क. थिंक अबाउट what impact you're creating on society, on your product, on the business, whatever. It has to create an impact. And I think we need to be braver than we are right now. हम लोग risks as marketeers, the industry, Pakistani marketing industry has stopped taking risks. Unfortunately, if you see सारे ads, सब campaigns एक जैसी लगती हैं. क्यों लगती हैं एक जैसी? I don't know. Maybe मतलब मेरी तरफ से तो ये कभी किसी को नहीं मैसेज आता कि यार उसको कॉपी कर लें. So I think creatives भी बेचारे क्या करें, उनको भी रेफरेंसेस मिलते हैं जिनके ऊपर वो काम करते हैं. लेकिन don't you think it's a bit bizarre in a sense कि अब तो नए यंग बच्चे बच्चियां हैं, like they are more डिजिटल savvy हैं, आपके पास ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, आपको पता है इंडिया में क्या हो रहा है, आपको पता है ईरान में क्या हो रहा है. लाइक आई स्टडीड फिल्म मास्टर्स में, तो इरानियन सिनेमा मैंने पढ़ा, अब वो लाइक दैट वाज लाइक इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड. मतलब पर देखिए ना सारों के अंदर रिफ्लेक्ट करता है. क्या हमारी पाकिस्तानी फिल्म, वो ईरान हमारा नेबर है, इंडिया हमारा दूसरा नेबर है. सॉरी कहना तो नहीं कह सकते बट लाइक उनके पास से जो कंटेंट निकल के आता है, जो क्रिएटिविटी निकल के आती है, वो यहाँ पर नहीं है. व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान? बिकॉज आई थिंक वी एक्सेप्टेड मीडियोक्रिटी एज अ नेशन. वी आर ओके विद थिंग्स, वी आर लाइक अच्छा यार जुल्म हो रहा है, खैर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा. या अगर कोई गलत हो रही है तो हम कहें अच्छा यार बर्दाश्त करो. हम सिर्फ यही कहते हैं चलो बर्दाश्त करो, इट्स ओके, इट्स ओके. आई थिंक दैट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मीडियोक्रिटी हैज been ingrained in us so much that we've stopped taking that risk. And also businesses also don't want to take risks. वो कहते हैं यार जो चल रहा है ना वही करते हैं. Why innovate? Why bring in something new when when it's working? Why break the cycle when the cycle is going well? So I think that ये समझने की ज़रूरत है कि साइकिल को ब्रेक करेंगे तो इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा.
So वो शायद इतना we're not that brave. We और need to be जनरली आपको लगता है braver. कि इंडिया से हम लोग क्यों बहुत ज़्यादा पीछे हैं? बिकॉज वेदर इट्स अ फिल्म, वेदर इट्स एन एड, डू यू थिंक इट्स मोर ऑफ, आई डोंट नो, लाइक इकोसिस्टम का भी फर्क है बहुत ज़्यादा? इकोसिस्टम फर्क है, सोसाइटी फर्क है, Society कल्चर तो more or फर्क less same ही है. है. नॉट रियली. क्या इतनी खुली है? वो खुली सोसाइटी है, हम नहीं है. हम बहुत सारी जगहों के ऊपर डर जाते हैं. हम लोग नहीं कर सकते. ओ यार पता नहीं क्या इम्पैक्ट आएगा. क्या लाइक व्हेन वी वर डूइंग दिस निकाह नामा कैंपेन, वी वर वेरी लाइक वी हैड प्रिपेयर्ड अ प्रॉपर क्राइसिस कम्युनिकेशन कि यू नो हम एक ऐसे काम करने जा रहे हैं, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा. ना somebody would come up and say कि यार ये क्यों किया है, किस लिए, क्या ज़रूरत है इस तरह की चीज़ करने की. तो we're scared as people. We don't know कि इसका repercussion क्या होगा. So that's why you've seen the campaign. We've done it in a very positive light. And what would, like, आपने भी बात की, what was the camp? Like अगर आप एक आम बंदे को बहुत सादा लफ्ज़ों में बताएं, उससे भी पहले ये कि आइडिया कहाँ से इसका आया? Because it's quite an interesting, और स्पेशली आई थिंक जब मुझे भी पता लगा तो आई वाज लाइक अच्छा इजी पैसा का इससे क्या ताल्लुक है? Like someone reached out and I was like मतलब क्या सीन है? It doesn't make sense. Well, it does make sense. So thank you for giving me this opportunity to explain how it makes sense. So basically, my agency came to me with this idea. Ali Rez in BBDO, he came to us with this idea, and he said that what about we can partner with a telco and do this idea. And I said no, this is perfect for us. We will do it. easypaisa will do this idea. And he also asked me that how will you merge easypaisa within this idea? It's just the idea was कि हम ख़वातीन को उनका निकाहनामा, the research says कि 95% of women don't read their nikahnamas. ठीक है, men also don't read them, but men don't have that impact because of the nikahnama, right? So we thought कि यार perfect. Most of the women in Pakistan are financially independent after they get married. उससे पहले तो वो या अपने अब्बू पे डिपेंडेंट हैं या भाई पे या जो भी उनके मेल नॉट एवरीबडी इज अ वर्किंग वुमन, राइट? सो मोस्ट ऑफ आवर वुमेन अनफॉर्चुनेटली आर डिपेंडेंट ऑन देयर मेल फैमिली मेंबर्स व्हेन दे आर नॉट मैरिड, एंड व्हेन दे गेट मैरिड दैट्स व्हेन दे स्टार्ट हैविंग सम मनी. That's when they get the financial independence that a woman should have. So what is the document you sign? You sign the nikahnaama. This is the first step of being financially independent is the nikahnaama. So easypaisa always wants to champion the cause of women financial inclusivity, women financial independence. What better way to tell women पढ़ लें बस. We're not saying, हम कुछ भी नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि कुछ काट लें ना काटें. That's not what we're saying. We're saying एक लीगली आपके पास डॉक्यूमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसको सिर्फ आपने पढ़ना, और जो पढ़ना भी चाहिए, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो एंड रेंट अ हाउस, you'll read your rental contract, right? You go take a job, you read your contract. And women who cannot read, वो क्या करें? So then we said कि अच्छा यार, easypaisa is a brand who does not believe in कि यार हमें सिर्फ अपना business angle नहीं देखना. We want to be a brand known as providing ease for everyone, whether that person is using easypaisa or not using easypaisa, or will probably not ever use easypaisa. We don't care about that. We want women to feel when they think about easypaisa, they should think कि यार ये हमारी ज़िंदगी में आसानी लेकर आते हैं. So we set up a hotline and we said कि आपके पास फीचर फ़ोन है, स्मार्टफोन नहीं है, कोई बात नहीं, हॉटलाइन पे कॉल करें, निकाहनामा के सुन लें. It's a 1 minute call. Just और आपको कॉल के पैसे भी नहीं देने, आपने मिस्ड कॉल देनी है, आपको वापस कॉल आ जाएगी. And we have 7 different languages, उनके अंदर आप सुन लें. So it's a very accessible But is it thing. a standard like nikahnaama, like is it the contract, is it? Yes, so basically nikahnaama is a standard document which is standardized all across Pakistan, and it is in Urdu for everyone. Whether आप किसी और लैंग्वेज में तो आपको ट्रांसलेशंस मिल जाती हैं, लेकिन लीगली जो आप साइन करते हैं या जिस पे अंगूठा लगाते हैं वो उर्दू है, उर्दू डॉक्यूमेंट है. It is not different for any sect. It is not different for any all Muslims will use this nikahnaama. And उसमें एक वही clauses हैं जो सब में सारे nikahnaama. It's a standardized template document that every union council has. Sorry. So we did not explain them. We just told them कि इस शिक में ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें डिवोर्स की क्लॉज होती है, इसमें आप कोई भी क्लॉज लिखवा सकते हैं. So these are just things that we are just making women aware of the fact कि ये कॉन्ट्रैक्ट है.
आप पढ़ना नहीं चाहते कोई बात नहीं, इजी पैसा विल हेल्प यू. आप सिर्फ सुन लें सो दैट व्हेन you're going to sign it या उस पर आप अंगूठा लगाने जा रही हैं तो आपको पता हो कि आप क्या कर रही हैं. That's it. So it was not and of course it was a challenge कि हमें उसको positive light में दिखाना था. We don't want to say कि यार वो दुनिया ख़वातीन लुट गई, मतलब ये दुनिया तबाह हो गई. We want to, it's a celebration, it's a good thing to have. And that's what the campaign said. And how was the response overall? I think it's one of the best campaigns that we've done so far. The kind of traction that we've gotten, the word of mouth that we've had, the film looks fantastic. Like to love to thank the director Rifah Qadri who did this. So the film looked fantastic. I think something that nobody expected out of someone like easypaisa. One thing that I want to add is कि ये नहीं था कि निकाहनामा पे पहले कभी किसी ने कोई बात नहीं की थी. We've seen hundreds of articles around it. We've seen a lot of YouTube videos, dramas के अंदर भी, जो अभी थोड़े अर्से पहले एक ड्रामा आया था उसमें बेनीजा ने भी इसकी बात की थी कि ये शिप ना काटे. So it is a prevalent issue in the Pakistani society, right? So we decided यार अच्छा ठीक है, किसी ने कभी बड़े इकट्ठे बड़े तर्ज पे तो इस पे कभी बात ही नहीं हुई. So we said fine, if this is how it is, then we will champion the cause. So that's and how do you measure these campaigns overall? Like ठीक है, एक तो उसका online के ऊपर तो it's a bit easy, digital के ऊपर, but what is the like metrics इसके क्या होते हैं? Number of calls that we got. Okay. And how the many number did you... of we're अभी तक तो हमारी कोई 15,000 calls already आ चुकी हैं. Okay. But we're और उसमें आपको ये है कि by the way हमने marketing बंद कर दी. अभी भी the average number of calls that we get every day is not dropping. The average visits on the app obviously are much higher than calls, which हमारी expectation नहीं थी. हमारी expectation थी कि यार ये कॉल ज़्यादा आएंगे और ऐप पे लोग कम आएंगे, लेकिन ऐप has given us a much better response than the phone calls. और calls में like जो bifurcation है कि किस स्पेशली सूबे से ज़्यादा आ रहा है वो डेटा हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली. वो हम नहीं ले सकते बिकॉज कॉल्स हम ये कोई ऑप्शन नहीं रखी हुई कि आप किधर से हैं. बट हाँ, सबसे ज़्यादा लिसन्ड लैंग्वेज इज उर्दू. उसके बाद पश्तो है एंड देन देयर इज इंग्लिश बहुत कम है. बट सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज सुनी जाती है वो उर्दू है. सो वी कांट एग्जैक्टली से कि कहाँ से आया है. But I think this was one of the most, not because we've done it, but I think it was one of the most inclusive campaigns that we've also done. And I think it's really probably campaign में भी, जैसे पहले मैं बता रहा था आपको, I was in Karachi, तो मैंने वो wall chalking इस पे देखी, तो इसमें I think वो feeling नहीं आई थी कि यार ये कोई liberals हैं या ये कोई rightist हैं या कुछ, because ये आपको जब अक्सर में it was a very difficult space to own, right? Because being neutral is also difficult in Pakistan, right? आपको नहीं पता होता कि कभी भी आप इस तरफ चले जाएं या कभी भी आप उस तरफ चले जाएं, लेबल हो जाए, राइट? सो आपका उस वक्त कब क्या लेबल हो जाए वो आपको नहीं पता होता. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेन न्यूट्रल, कि हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी कि हम वी डोंट वांट टू गो ऑन ईदर साइड. वी वांट टू रिमेन न्यूट्रल बिकॉज वी वांट, नॉट बिकॉज हम डरते हैं, इट्स जस्ट बिकॉज वी डोंट वांट द कैंपेन टू लूज इट्स इफेक्ट. कि कोई किसके ऊपर तनकीद करे तो आपका इफेक्ट लूज हो जाता है ना. सो वी एक्चुअली we talked to lots of lawyers before we went into this campaign कि हमें exactly explain करें कि क्या होता है, because हमें तो नहीं पता ना कि क्या होता है. We went to a lot of scholars and then we found out कि हमें पहले लगता था कि हर सेक्ट का भी शायद फर्क निकाहनामा होता है, लेकिन नहीं होता. उसके एक ही निकाहनामा यूज़ होता है हर जगह. सो we talked to a lot of, and we kept it very very neutral, like very sect neutral, very ये नहीं है किसी रीजन को वो कर रहा है, डिपिक्ट कर रहा है. सो we kept it very neutral, we kept it very celebratory and very positive, which was a difficult thing to do, I must say. I'm sure. क्योंकि जब आप women empowerment की कोई कैंपेन की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या rebellious कैंपेन आने वाली है. So we didn't want to be rebellious. It's not a rebellious act, it's just a document that you should read. No, absolutely. Let's talk a little bit about financial literacy, because personally मुझे मेरे ख्याल से पिछले 2-3 सालों में
थोड़ा सा ज़्यादा कि यार ये भी कुछ है, वरना तो इट्स जस्ट लाइक या तो आप कमेटी कर लें या पैसे आएंगे आपके पास तो कुछ करेंगे, बट देयर इज़ नो एजुकेशन अराउंड इट. और सादा लफ्ज़ों में सर अभी वो बज़वर्ड्स भी ये थोड़े से बन गए हैं, बट सादा आई थिंक उसका मतलब यही है कि यार जो भी आप कमा रहे हैं, वेदर इट्स 40,000, वेदर इट्स 4 लाख या 4 करोड़ जितना भी है, आपको पता हो कि हाउ डू यू वांट टू स्पेंड इट. और आपको लाइक वो जो मनी एजुकेशन है उसके ऊपर नेटफ्लिक्स पे तो आपको बहुत ज्यादा शोज मिल जाते हैं, आपने कैसे वो करना है. बट नॉट एवरीबॉडी, किसके कौन नेटफ्लिक्स देखता है, राइट? बट हाउ डू यू सी दिस होल लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी लैंडस्केप? अभी हमने देखा कि बैंकिंग वाली साइड पे कुछ ज़रा बैंक्स वगैरह करते हैं, बट व्हाई डोंट वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान अभी तक इन दिस डिजिटल स्पेस? बड़ा मुश्किल ये इसका आंसर है, बिकॉज आई थिंक एक जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि पीपल आर वेरी स्केयर्ड ऑफ बीइंग फाइनेंशियली इंक्लूडेड. उनको लगता है कि यार हम फाइनेंशियली इंक्लूड हो जाएंगे तो हमारे पैसे कहीं चले जाएंगे, या उनको ये लगता है कि पता नहीं सिक्योर, आई मीन बैंक्ड. ठीक है, सो आप जब तक आप फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं होंगे एज समबडी, वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, आप उसको कैसे कैश कहीं तक आप खर्च कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई तो आप पैसे बढ़ा नहीं सकते. वो अगर 40,000 हैं तो वो 40,000 ही रहेंगे. डिप्रिसिएशन से शायद इन्फ्लेशन से और भी कम हो जाएंगे. सो आई थिंक द एजुकेशन, आई थिंक वी एज पीपल आर वेरी स्केयर्ड कि हमारे पैसे कहीं चले जाएंगे. हमें फिजिकल कैश की बहुत आदत है, एंड दिस probably will only change if the government and changes their monetary policies. अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हुआ था, they changed their monetary policy, उन्होंने अपना बड़े नोट बंद कर दिए थे, राइट? करप्शन कर्टेल हुई उससे. देन दे सेड कि अच्छा डिजिटल पेमेंट्स होंगी, बड़ी पेमेंट्स, छोटी पेमेंट्स जो हैं वो सिर्फ कैश में हो सकती हैं. सो डिस्करेज कैश. हमारे यहाँ पे अभी भी कैश हमारा सबसे बड़ा कंपेटिटर है. ठीक है, हम हर वक्त ये अगर हम ब्रीफ देते हैं कि हम कहते हैं कैश नहीं दिखाना, कैश की बात नहीं करनी, बिकॉज कैश वी वांट टू डिमोनाइज कैश, बट दिस नीड्स टू बी एन एफर्ट कमिंग फ्रॉम the entire economic system, right? True. We cannot do it alone. Even the banks cannot do it alone. It has to be a push from the monetary policy. It has to be like कि अच्छा यार अभी भी हम अगर देखें तो हमारी गाड़ियों की करोड़ों की पेमेंट कैश में हो रही होती है. लाइक कौन सी दुनिया में ऐसे होता है? नहीं, आई रिमेंबर अभी आई वाज जस्ट ट्रैवलिंग और मेरे पास ई वीज़ा था, तो मैं एयरपोर्ट गया, वो FIA के वो जो काउंटर है, तो मैंने उसे दिखाया एंड उसने कहा सर वो प्रिंट करवा के लाएं. आई वाज लाइक यार मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करता हूँ, लाइक दिस इज, और वहाँ लिटरली आई एम नॉट इवन किडिंग, उसके साथ एक बैनर लगा हुआ था डिजिटल पाकिस्तान का, एंड आई वाज जस्ट लाइक यार व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. और वहाँ आप गए हैं, उसने 150 रुपए उस प्रिंट का लिया है, व्हिच इज जस्ट लाइक रिडिकुलस, राइट? फोटोकॉपी करा के लाएं सब चीजें. एंड बाय द वे ये पाकिस्तान का क्योंकि नॉर्म है, तो जैसे अगर आप, सॉरी फॉर डाइग्रेसिंग, लेकिन अगर आप वीजा लगवाने यहाँ पर कहीं जाते हैं, बाहर के मुल्कों में तो वीजे कोई भी नहीं पेपर लेता. हम फाइलें मोटी मोटी बना के लेते हैं. दे आस्क फॉर इट, दे आस्क फॉर पेपर डॉक्यूमेंटेशन. सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट दिस पेपरलेस कैन नॉट बी डन विद एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा मुश्किल है ये करना. मसल ही नहीं है ना. हम जितनी भी मर्जी बात कर लें फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी की, एम्पावरमेंट की, फाइनेंशियल इंक्लूजन की, हम लाइक फॉर एग्जाम्पल ईजी पैसा इज द easiest bank account that you can open. आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ ID कार्ड चाहिए. लाइक हाउ इजी कैन इट बी? इससे आसान तो नहीं हो सकता कोई भी अकाउंट खोलना, बट पीपल स्टिल डोंट वांट टू डू इट. दे आर वेरी स्केयर्ड कि हमारे टैक्स में जी पैसे कट जाएंगे. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टोल्ड, मेरी एक खातून घर पे काम करती हैं मेरी अम्मी के घर, तो मैंने उसको कहा कि तुम अपनी तनख्वाह क्यों नहीं ले लेती, ईजी पैसा में तुम्हें बना देती हूँ. वो बाजी होते थे कट देने पैसे. नहीं, मैंने कहा नहीं कटते, क्यों कटेंगे? अच्छा, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से आ रही है? गॉड नोस, आई डोंट नो. जैसे फॉर एग्जांपल जब आप ATM से करते हैं तो आपके कोई 15 रुपए कटते हैं ना, तो वो कहते हैं यार ये पैसे हमारे कट गए, ये तो जाया हो गए पैसे. सो दे डोंट सी इट एज अ सर्विस, राइट? आई ऑल्सो ऑब्वियसली एग्री कि जिसकी तनख्वाह इतनी कम होगी उसको शायद ये 15 रुपए भी हर्ट करेंगे, राइट? बट they don't see it as a service because they don't see कि हमें अगर उनका कैश ही हर जगह चल रहा है, उनका काम चल रहा है, उनको नहीं फर्क पड़ता. तो अगर आप जब तक इकोनॉमी डिजिटल नहीं होगी, हम कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते. सो जब इंडिया के अंदर ये चेंज आया तो उनकी भी कुछ सिर्फ 30% लोग बैंक थे, बट व्हेन दिस हैपेंड
They demonized cash. They talked about digital. They stopped big payments on digital with cash. There's now 90% banked population है इंडिया की. Wow. So पूरे I इंडिया में mean, it's 90%. 90% banked population है. So everybody is banked. मतलब अगर आप यूरोप जाते हैं कि do you imagine somebody saying कि मेरा बैंक अकाउंट नहीं है. Yeah. अगर आप अमेरिका जाते हैं आप कैन यू इमेजिन समबडी सेइंग कि मेरे पास वो लोन लेते हैं ताकि उनकी क्रेडिट स्कोरिंग बेहतर हो. ठीक है, आई हैव समबडी इन अमेरिका एंड दे सेड कि मैंने अपने बेटे को लोन लेके दिया है उसके नाम पे ताकि उसकी क्रेडिट स्कोरिंग बेहतर हो. राइट, सो पीपल, दैट्स द बैंकिंग सिस्टम, लाइक दैट्स हाउ मच बैंक्ड द पॉपुलेशन इज. बट पाकिस्तान में दैट्स not like nobody wants to because they're scared of being taxed, they're scared of being declared कि हमारे पास पता नहीं कितने पैसे हैं. So I think we're just scared as a nation. और जनरली आपको लगता है कि जो लिटरेसी वाली साइड है, एक तो ये है ना कि इंक्लूजन और आपने जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, जो लिटरेसी वाली साइड है उस साइड पे क्या हो सकता है, या क्या लेट्स से अगर एक यंग बच्चा जेन ज़ी का ये देख रहा है और वो कह रहा है अच्छा ये भी कुछ है फाइनेंशियल लिटरेसी, वो जाके गूगल कर रहा है, सो ये क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड हाउ यू शुड या यू कैन सॉर्ट ऑफ लर्न अबाउट दिस. I mean, you have Google is your playground. Financial literacy, I would not say go to the easypaisa page और वहाँ पर आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी. Financial literacy is कि how do you manage your money? How do you make investments? It's important to do investments. It's important to save. Although मैं शायद बुरी हूँ, मैं शायद नहीं करती save. But if my mom watches like खुद तो करती नहीं है, लोगों को कह रही है. But like it's important to know all of this कि आप अपने पैसे के साथ क्या क्या कर सकते हैं. And I think आजकल के बच्चे are much smarter than what we were when we were young. Like अभी जो the kind of tools that they have right now are much more than we did. अभी कुछ अर्सा पहले मैं टिकटॉक पे गया हुआ तो वहाँ TikTok educates you so much about these things. और वहाँ कुछ बच्चे हैं वो मुझे मिले, आई थिंक या मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने कोई रिसर्च रिपोर्ट थी, कुछ बाहर के थे कुछ पाकिस्तानी भी, उन्होंने टिकटॉक के जो बायोज होती है ना उस पर इन्वेस्टर्स लिखा हुआ, एंड पीपल लाइक व्हाट डू यू मीन बाय योर इन्वेस्टर्स. उसने कहा हाँ वो हैव इन्वेस्टेड लाइक 100 रुपए का बिटकॉइन लिया हुआ है, मैंने 1000 रुपए का लिया हुआ है. इट्स जस्ट लाइक क्रेजी. लाइक जस्ट थिंक अबाउट द होल थॉट प्रोसेस ना. एग्जैक्टली. सो किड्स दीज डेज थिंक अबाउट, आई थिंक मेरी कोई एडवाइस उनको नहीं चाहिए, वो खुद हैं काफी स्मार्ट, बट विच इज वेरी गुड. आई थिंक पीपल दीज डेज आर मोर aware of financial literacy than we were when we were children. और अभी recently आप लोगों की saving pocket campaign है, ये क्या campaign है? So basically it's a goal based campaign जिसकी मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बात की थी. So it's a product that allows you to save towards a goal. So it's a mini committee version. It's a mini committee version, okay. Yes. So you have a goal. You, for example, say कि मैंने by June, you tell the app के अंदर जो product है, you tell them कि यार मैंने by June 5 लाख रुपए जमा करना है. तो वो आपको कह देगा अच्छा ठीक है, अब से लेके जून तक आपको 5 महीने हैं आपके पास और आपने ₹1,00,000 पर महीना इस प्रोडक्ट से आपका कट जाएगा, आपके अकाउंट में से कट जाएगा और वो यहाँ पर सेव हो जाएगा. So then they have two options. One is you can have a profit on it and the other is that you can like not have a profit on it. So अगर आपके पास profit आ जाएगा तो गोल आपके पास जल्दी आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो then it's going to take 5 months to get to the goal. और उसमें कुछ कट भी आप लोग आखिर में करते हैं, is it a percentage which okay. Yeah. And so yeah, you timely आप पे करें, आपको rewards मिलेंगे, and so it's basically goal based saving that you can do. And the best part is कि आप 100 रुपए भी सेव कर सकते हैं. Like no other bank can let you save for 100 रुपए. Right, you can start your savings from even 1 rupee. अभी हम recently कुछ researches हमने कराई थी और उसके अंदर when we talked about savings, we asked people कि यार आप क्यों savings में नहीं जाना चाहते हैं, and they're like कि वो actually ना saving को तो सिर्फ अमीरों का काम है save करना, क्योंकि जितने पैसे savings करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं. That's not true. Yeah. You can start like अगर आपके ऐप में 100 रुपए भी हैं, अगर आपने वो डाल दिए हैं गोल के अंदर तो ठीक है, आपकी सेविंग वहाँ से शुरू हो जाएगी. जब आप लोग रिसर्च करते हैं और आई एम श्योर जेन ज़ी मिलेनियल सालों से आप लोग बात करते होंगे,
वहाँ से रिसर्च से आपको क्या पता चलता है, like what are their sort of thought process around the whole saving, financial inclusion, financial literacy? यही सेविंग्स पे तो यही है कि अमीर लोग सेव कर सकते हैं. Okay. ठीक है, this is the biggest thing that has come out कि the savings is not for people like us because ज़्यादा पैसे चाहिए, सेव करने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए. आप छोटे अमाउंट से सेव नहीं कर सकते. That's the perception. ओल्डर पीपल परसीव के यार अगर हम बैंक फॉर एग्जाम्पल अगर हम अनबैंक्ड के पास जाते हैं उनसे बात करते हैं कि आपने क्यों नहीं किया, कुछ तो कहते हैं कि यार हमें ज़रूरत ही नहीं, हम कैश पे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, हमें नहीं ज़रूरत बैंक की. कुछ कहते हैं कि यार टैक्स में पैसे कट जाते हैं, हमें नहीं वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज हम क्या बनाते हैं, राइट. बट देन देयर आर अदर पीपल हु से कि अच्छा डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, वी डोंट वांट टू डू दैट. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ कमर्शियल बैंक परसेप्शंस ड्राइव दिस इंडस्ट्री बिकॉज सबसे बड़े तो वही बैंक्स हैं ना. ईजी पैसा और हम लोग जो वॉलेट्स हैं we're obviously started later. But बड़े banks तो वही हैं, they drive perceptions of the banking industry and financial literacy. And Gen Z, I think they're very smart. They're like you said, investors. So they know more than they know a lot more than. But you know they would वो फिर इस तरह की बातें करते हैं. अच्छा हम सेविंग्स करें, हमारे बाहर से रेमिटेंस की बात होती है कि किस तरह आ सकते हैं पैसे. So for example, we do freelance work. You know how we're going to get that money in Pakistan. You know can easypaisa support that or not? So these are the kind of questions that Gen Z और जो older लोग हैं ना उनके बड़े different वो हैं notions हैं about financial literacy. बाकी अभी जैसे वुमेंस डे के ऊपर आई थिंक दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी लॉन्च. सो जनरली जो इजी पैसा का रोल है, स्पेशली अगर हम लोग वुमेन एंगल से देखें, आप लोगों का लाइक व्हाट इज अ ब्रॉडर विजन अराउंड the financial inclusion, financial literacy? Yeah, generally about, you know, the money sort of, no, I'll not say a problem, but money issue जो है उसके आसपास. आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी विमेन फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी के बारे में बात की है. हम लोग like you've seen हमारी we focus on we don't believe in making products for women just pink washing everything, right? We want to do things which are actually good for women. Like हमारी जो अभी हमने निकाहनामा की, the reason why we did it was because that's the first step of financial independence for a woman in Pakistan. So obviously we want to own that space. Then the next campaign that we did was the savings pocket campaign. Although that product is for everybody, but we did it around pockets for women, and we want to champion the cause of physical pockets for women and digital pockets. So the idea behind the savings pocket campaign was also this कि ख़वातीन के कपड़ों में जेबें नहीं होती, वो क्या करती हैं, हाथ में चीज़ें पकड़ के रखती हैं, बैग लेके जाना पड़ता है. तो you know why don't women have pockets? So women need pockets. So then we converted that into savings pocket के घर में जो सेव कर रही होती हैं वो ख़वातीन ही होती हैं generally, right? So we will give them pockets to save. So we will champion for the cause of physical as well as digital pockets. So that's what we want to do. And we want to continue this. We want to talk to women without saying कि अच्छा यार इससे हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छा कि हमने कैंपेन की 50% ख़वातीन हमारे पास आ गई. It's a very slow process. Yeah. It's a very slow process. And we accept the process that it is slow. We don't expect कि अच्छा यार चेंज हो जाएगी पूरी दुनिया एक कैंपेन में. नॉट पॉसिबल. ट्रू. एंड व्हाई डोंट वी सी, आई मीन इसकी बहुत बड़ी लिटरेसी का जो कनेक्शन है इज थ्रू द डिजिटल. व्हाई डोंट वी सी अ लॉट ऑफ वेरी ऑर्गेनिक कंटेंट अराउंड दैट? मतलब इन्फ्लुएंसर्स हो गए, वेदर इट्स अ टीवी चैनल, वेदर इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मूवीज, यू नो, फिल्म्स, लाइक डिजिटल पे एनीथिंग, यू नो, वहाँ हम लोग आपको क्यों लगता है कि इतना नहीं देखते हैं? शादियों से बाहर निकलेंगे तो कुछ होगा या इलेक्शन के प्रॉब्लम से निकलेंगे तो कुछ होगा. बट आपको लगता है कि वो एक बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ से एक ऑर्गेनिक पुश बट आती है? लाइक आई सी अ लॉट ऑफ female influencers talking about financial independence for women. I see a lot of female influencers, like there are a lot of influencers, I wouldn't want to name, but a lot of influencers who do talk about financial literacy. They are only financial influencers, right? बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे हैं जो कर रहे हैं, but हमारे यहाँ पे entertainment also sells a lot, right? So everybody wants to do what sells. So I mean, politics is the biggest entertainment in Pakistan as well. So वो भी लोग उसके भी ऊपर करते हैं. आप, you know, like you would do podcasts with politics more than financially inclusive people. नहीं, मैं अब थोड़ा कम कर रहा हूँ आजकल. But yes, but this is what I'm saying. Like आप सब content वो बनाते हैं जो
चल रहा होता है, right? ये थोड़ा boring content है, इस पे इतने लोग नहीं गाते, but it's the way you talk about it. You can talk about it in a very positive light. You can also talk about it in a very rebellious tone. So I think it's the way you talk about it that matters. And there are people who talk about it. So I think इसमें obviously I think थोड़ा सा time लगेगा. I think the most important thing is to start the conversation. Yeah, that's the biggest. Yeah. That's what we've done. We've started the conversation. Yeah. Yes. But thank you so much for taking the time out, and it was great talking to you. And good luck with the future campaigns. Thank you so much. It was great being here. Thank you. Thank you.